Welcome to Saturday YouTube Live. I'm Nobonita and I'm going to be there with you throughout this session today. So first of all, good afternoon to everyone who has joined us. तो आप कैसे हो? आपका मूड कैसा है? Definitely मूड तो बहुत अच्छा होगा because it's a festive season, right? But you don't have to forget that it is also the exam season, right? तो festival के चक्कर में please do not neglect your exams. Give equal preference to your exams. क्योंकि अगर एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आए तो फेस्टिवल तो वैसे ही अच्छा होना है, राइट? तो नाउ आज के सेशन में हम करने क्या वाले? आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले अबाउट सम लाइफ सेविंग डिस्कवरीज, right? But before we go into this topic, the ones who have joined us, the kids who have joined us, नीचे आपको दिखेगा comment box. So please write down your name, your class and the place from where you belong, so that हमारा interaction और भी अच्छा हो. और सिंस आपको पता है हमारा आज का टॉपिक है लाइफ सेविंग डिस्कवरीज, तो अगर आपको भी कुछ ऐसे डिस्कवरी के बारे में पता है which had actually saved millions of life, please do let us know by writing it down in the comment box. तो चलो हम जाते हैं हमारे आज के टॉपिक में. अब जब हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली यू नो दैट वी वर नॉट फॉर्म द वे वी आर नाउ, राइट? वी वर एक्चुअली एप मेन, और एप मेन से धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ एंड देन वी केम अप टू द स्टेज ऑफ बीइंग कॉल्ड एज ह्यूमन. और जब ये ह्यूमन फॉर्मेशन हुआ तब भी वी एक्चुअली डिडंट हैड सो मच ऑफ डेवलपमेंट व्हिच वी सी अराउंड अस नाउअडेज, क्योंकि तब द लाइफ वाज वेरी प्रिमिटिव. धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा था. ह्यूमन बीइंग वेर कमिंग टू नो कि एनवायरनमेंट क्या होता है एंड हाउ दे कैन यूज द एनवायरनमेंट. तो धीरे धीरे वो सिविलाइज हो रहे थे. दे हैड स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज एंड दे वर मेकिंग डिस्कवरीज इन मेनी फील्ड्स व्हिच कुड मेक द लाइफ बेटर. एंड सिमिलरली मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आ रहे थे, बहुत सारे इवोल्यूशंस हो रहा था. Now, if I'm talking about the civilized world, अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो what we have seen is that people before they had a very short life expectancy. मतलब उनका जो लाइफ स्पैन होता था it was around 30 to 40 years and within that time they used to die. So kids when they were born at that time most of the kids they used to die. या तो अगर they have reached the infant stage and उससे वो childhood stage में आ गए, we saw the kids dying at that stage. और इवन इफ दे हैड रीच्ड द एडल्टहुड तो उसमें भी वो बहुत लंबा नहीं सर्वाइव करते थे. दे यूज्ड टू डाई विद इन 30 years और 40 years. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स तब मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था. सो व्हेन दिस पीपल यूज्ड टू सफर फ्रॉम एनी डिजीजेस दैट टाइम मेडिकल फील्ड दैट डिड नॉट हैव सो मच ऑफ एडवांसमेंट. ओके, इतने सारे मेडिसिन नहीं होते थे, इतने सारे मशीन्स नहीं होते थे जिससे डायग्नोस किया जा सके दैट हाउ आर दीज पीपल डाइंग या व्हाट इज द कॉज दैट इज मेकिंग द पीपल डाई. But then what we saw is that by the entry of the 20th century, जैसे 20th century आया, we saw a huge development in medical field. बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आए जिसने मेडिकल फील्ड को बहुत आगे कर दिया and because of which the life expectancy increased. तो अगर हम बात करते हैं about the life expectancy nowadays in present world, the expectancy is somewhere around 70 to 80 years. Okay, so we actually expect a person to live till 70 or till 80 years if everything is good. तो जब हम बात करते हैं इस मेडिकल फील्ड की कि कौन से ऐसे डेवलपमेंट आ गए, कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई थी बाय द स्टार्ट ऑफ दिस 20th century दैट एक्चुअली हैड सेव्ड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ. तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा पहला ऐसा टेक्नोलॉजी which actually helped in saving life. And this is a very common technology which you all know about, pasteurization. तो pasteurization हम सबको पता है what it is. So when we are talking about pasteurization, pasteurization was actually discovered in the year 1864. And the person who discovered this process was Louis Pasteur. ओके, तो जब हम लुई पैस्चर के बारे में बात करते हैं, उन्होंने जो पैस्चराइजेशन प्रोसेस को उन्होंने डिस्कवर किया था, एक्चुअली ही डिड इट टू हेल्प द वाइन इंडस्ट्री बिकॉज ही हैड सम स्टूडेंट्स हु हैड वाइन इंडस्ट्री. और वहां पे उन्होंने देखा कि द वाइन दैट यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड वो बहुत जल्दी सार हो जाता था.
Okay, now there was a big doubt कि ये wine खराब कैसे हो रहा है? How is it getting damaged? So Louis Pasteur actually studied at that time कि ये souring process क्यों हो रहा है, and he came to know that it is actually because of the microorganisms. तो फिर उन्होंने टेक्निक निकाला ऑफ पैस्चराइजेशन, और जो अभी हम यूज कर रहे विथ मिल्क. तो हम क्या करें, हम मिल्क को लेते हैं एंड दैट मिल्क इज बीइंग बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर विच इज लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम मिल्क को हीट अप करते हैं टू अ टेम्परेचर विच इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस. और जैसे मिल्क को हीट किया जाता है, व्हाट डू वी सी इज दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं इन द मिल्क, it dies. So we are actually killing the microorganisms that was there in the milk. अब जब हम ये प्रोसेस करते हैं, the best part is that we are not damaging the taste of the milk, neither we are damaging the nutritional value of the milk. तो milk की nutritional value भी वही है और taste भी वही है. So this is the pasteurization process which Louis Pasteur had actually discovered. But as I told you, he did not do it for the milk at the first instance. He actually had experimented it with wine. Okay, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वाइन को लिया था एंड वाइन को उन्होंने हीट अप किया था टू अ टेम्परेचर ऑफ 50 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बहुत कम टाइम के लिए इनको हीट किया गया था, इस वाइन को हीट किया गया था. And it was found out that after some time the microbes they were killed because of that heat. और जब इस वाइन को रखा गया, it was seen that the wine did not get damaged even after being kept for some months or some years. तो फिर इस प्रोसेस को यूटिलाइज किया गया फॉर मेकिंग द मिल्क प्योर सो दैट the milk can be consumed. Because उन दिनों में देखा जाता था कि because of milk बहुत सारे people they died. Okay, just imagine drinking milk, people die. हम बोलते थे milk is a very good balanced food. Why? Because milk हमें सारे vitamins and minerals देते हैं. But that time the milk when was consumed by people, people used to die. बिकॉज वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कंज्यूम करते थे और उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर उनके बॉडी में इन्फेक्शन करते थे एंड दे यूज्ड टू डाई बिकॉज ऑफ दैट. सो कमिंग अप विद पैस्चराइजेशन वाज द बेस्ट थिंग बिकॉज नाउ पीपल वर ड्रिंकिंग मिल्क एंड नथिंग वाज हैपनिंग टू देम. और ये प्रोसेस बस उन दिनों में ही नहीं काम आया, इट्स स्टिल बीइंग हेल्पफुल टू अस बिकॉज वी आर स्टिल ड्रिंकिंग मिल्क विच इज बीइंग पैस्चराइज्ड. तो ये था वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. अदरवाइज आप सोचिए, now if that discovery was not there, हम तो मिल्क पीते ही नहीं, right? Because हम मिल्क पीते ही, हम मिल्क ड्रिंक ही नहीं कर पाते, because then it would have killed us. Now coming to our next discovery, the next discovery is insulin. आप बोलोगे इंसुलिन डिस्कवरी, इंसुलिन तो हमारे बॉडी में रहता है, राइट? इंसुलिन हमारे बॉडी में रहता है, पर इंसुलिन क्या काम कर रहा है एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर द पीपल, दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1921. And who discovered it? It was by Frederick Banting and Charles Best. तो ये दोनों थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था and they came up with the best use of insulin. अब जब हम इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, वी ऑल नो दैट इंसुलिन इज अ हार्मोन और इस हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है इन पैनक्रियास, राइट? सो पैनक्रियास इज द स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी विच इज प्रोड्यूसिंग दिस हार्मोन, राइट? और ये हार्मोन क्या कर रहा है? दिस हार्मोन इज रिड्यूसिंग द शुगर लेवल इन आवर ब्लड. तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, अगर ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होता है, सो इंसुलिन इज मेकिंग श्योर कि वो ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाए, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज चेकिंग आवर ग्लूकोज लेवल. तो अगर किसी के बॉडी में पैनक्रियास इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ठीक से, सो व्हाट वी सी इज दैट the person starts suffering from diabetes. Okay, and during that time before 1921 we had seen people dying of diabetes. मतलब अब अगर हम बोलते ना that someone is dying from diabetes, we will be laughing कि डायबिटीज से कौन मरता है. बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब इंसुलिन का प्रॉपर यूज नहीं पता था, वी हैड सीन पीपल डाइंग ऑफ डायबिटीज. So this actually made Frederick Banting and Charles Best to come up with a method to use this insulin.
तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. ओके, सो दे डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड इन दैट एक्सपेरिमेंट्स दे केम टू नो दैट पैनक्रियास के अंदर एक सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स. Okay, so islets are a group of cells that are found inside the pancreas. तो इनको पता चला कि आइलेट से कुछ तो ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है जिससे शुगर लेवल को कम किया जा सकता है. So sugar level will reduce because of this substance. And what was that substance? That was insulin. ओके, तो ड्यूरिंग देयर मोर एक्सपेरिमेंट्स उनको ये भी पता चला कि जो डॉग का पैनक्रियाज है और जो ह्यूमन का पैनक्रियाज है, समवेयर वी आर प्रोड्यूसिंग द सेम टाइप ऑफ इंसुलिन. मतलब इंसुलिन जो होता है वो सिमिलर काम कर रहा है. So what they did was that they started experimenting with dog. Okay, so during that time Benting and Best ने क्या किया, they removed insulin from a dog's pancreas. उन्होंने डॉग के पैनक्रियाज से इंसुलिन को रिमूव किया. अब कैसे रिमूव किया? Of course they had to go through a procedure. अब उस प्रोसीड्योर में पहले उन्होंने टाई किया था the pancreatic duct of the pancreas. तो अगर हम पैनक्रियाज के बारे में बात करें, राइट, सो ये आ गया पैनक्रियाज. तो पैनक्रियास से एक पाइप निकलता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस पैनक्रियाटिक डक्ट को टाई कर दिया था ताकि जो पैनक्रियास में जो सिक्रीशन होती है, जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, इट कैन नॉट ट्रैवल इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट. तो सारा जो सिक्रीशन है इट गेट्स कलेक्टेड इन द पैनक्रियास ओनली. तो उन्होंने एक डॉग के पैनक्रियाटिक डक्ट को उन्होंने टाई कर दिया. ओके, तो वंस द पैनक्रियाटिक डक्ट वाज टाइड, ऑफ कोर्स पैनक्रियास में जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा था और भी जो अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे थे वो वहीं पे रह गया. तो फिर उन्होंने क्या किया, दे रिमूव द पैनक्रियास फ्रॉम द डॉग. तो डॉग के बॉडी से उन्होंने पैनक्रियास को रिमूव किया और फिर पैनक्रियास से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया द सब्सटेंस. ऑफ कोर्स इंसुलिन को तो उन्होंने अकेले एक्सट्रैक्ट नहीं किया हुआ था, बिकॉज इंसुलिन अकेला नहीं प्रोड्यूस होता है इन द पैनक्रियास. इन द पैनक्रियास मेनी मोर सब्सटेंसेस आर गेटिंग प्रोड्यूस. सो सबको मिला के उन्होंने लिया था एक्सट्रैक्ट. अब जैसे उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया, उन्होंने क्या किया, इस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने इंजेक्ट किया था इनटू द वेन ऑफ अनदर डॉग. ओके, सो दे एक्चुअली टुक अनदर डॉग और उसके वेन में उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट किया. अब what was the condition of the other dog? उसको भी देख लेते हैं. तो first of all, the dog into whose vein the extract was injected, उसका नाम था Marjorie. Okay, so Marjorie was the name of the sick dog. अब वो sick कैसे हुआ? Actually इस डॉग के पैनक्रियास को रिमूव कर दिया गया था. Okay, so the pancreas was removed from the dog's body to see what is the effect on the dog. तो of course pancreas remove हो गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया and there were many problems in the dog's body. तो जैसे इस एक्सट्रैक्ट को वेन में दिया गया, what they saw was that within a certain period of time, okay, Marjorie raised its head. The dog raised its head. Not only raised its head, the dog stood also and even wagged its tail. तो वो अपने टेल को भी हिलाने लगा. So that means the dog was getting enough energy to get up and do the work. And कैसे हुआ? Because of course जो बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी and that's why the dog was able to do this kind of movement. तो दिस वॉज अ सक्सेस फॉर बेंटिंग एंड बेस्ट, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस एक्सट्रैक्ट को जैसे इंजेक्ट किया गया into the sick dog started doing movement, started doing activities because the sugar level of the dog, that is the Marjorie, उसका जो sugar level था वो reduce हो गया. Okay, so that was a big achievement, but then it was short-lived. Okay, it was very much short-lived. क्योंकि जैसे इंसुलिन को पुश किया गया, of course that insulin was with other substances also. तो जैसे ही पुश किया गया, of course after some time the dog started doing all the activities. But insulin थोड़े देर के लिए काम करता है, ये हमेशा के लिए नहीं काम कर सकता. तो after a certain period of time, they saw that Marjorie again started feeling sick. Okay, तो वो फिर से sick feel करने लगी. तो now then they understood कि इंसुलिन थोड़े डोज में हमेशा नहीं काम कर सकता to reduce the blood sugar level. So इंसुलिन को देना चाहिए at regular intervals so that the insulin can keep the sugar level down. तो इसमें से शुरू हुआ the further steps of discovery. तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने डॉग से फिर शिफ्ट किया टू काउ, काउ टू पिग, और पिग हुआ था द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल बिकॉज पिग्स की जो इंसुलिन थी वो ज्यादा काम कर रही थी इन ह्यूमन बॉडी टू रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल. बट देन there was a problem. The problem is that इंसुलिन को हमेशा देना पड़ेगा. It's not that हमने एक डोज ले लिया तो full lifetime we are saved. ऐसा नहीं है. So we have to keep on taking the insulin doses. तो how many pigs could be slaughtered? बहुत सारे pigs को slaughtered किया गया. But there is a level, right? There is a limit. तो फिर then other companies came into action. फिर वो शुरू करने लगी अपने एक्सपेरिमेंट्स की कैसे इंसुलिन को बनाया जाए विदाउट स्लॉटरिंग एनी एनिमल. एंड हियर केम द डिस्कवरी, द बैक्टीरिया. तो ये देखा गया दैट विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियाज बॉडी वी कैन एक्चुअली मेक इंसुलिन. तो प्रेजेंटली जो हम इंसुलिन यूज कर रहे हैं ना, दैट इंसुलिन इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरियाज बॉडी. और जो कंपनी थी जो पहले इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया था, दैट वाज एली लिली. तो एली लिली कंपनी दे केम अप विद बायोटेक्नोलॉजी. उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया और उन्होंने बनाया द इंसुलिन फ्रॉम द बैक्टीरिया, और उन्होंने इसको नाम दिया द ह्यूम्युलिन, ओके, व्हिच कुड बी गिवन टू द ह्यूमन. So that was about the whole history of how insulin had actually got discovered and modified. But going back to Benting, जब बेंटिंग ने इस पूरे इंसुलिन को समझा, the process, the discovery of how it helps the body, that time he did not call it as insulin, okay? That time he actually called it as iletin. Iletin is because of the word islets, जिससे ये इंसुलिन प्रोड्यूस होता है. So he had actually called it as iletin. एंड देन एज आई टोल्ड यू ना, उनको समझ में आया कि ये शॉर्ट लिव्ड है, तो उन्होंने बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स किए. एंड देन दे यूज अदर टीम मेंबर्स टू प्यूरिफाई द इंसुलिन फॉर ह्यूमन यूज, एंड दैट टाइम दे कॉल्ड इट एज इंसुलिन. तो है ना ये बहुत बड़ी डिस्कवरी, बिकॉज पीपल वेर डाइंग ऑफ डायबिटीज बिफोर, बट नाउ यू सी पीपल डोंट डाई ऑफ डायबिटीज, ओके. सो वी कैन एक्चुअली हेल्प आवर बॉडी टू लिव लॉन्गर even if we have higher sugar level. Now, let us go to our next discovery. The next discovery is anesthesia. अब anesthesia क्या है? ये एक बहुत ही common term है when people go for surgery. Okay, तो surgery में जब हम जाते हैं, like suppose I am getting operated. ओके, मेरे को शायद से गोल ब्लैडर स्टोन हो गया, तो मेरे गोल ब्लैडर से भी स्टोन को निकालना है. सो वेयर इज द गोल ब्लैडर? ऑफ कोर्स इनसाइड द बॉडी, राइट? तो अगर अभी इस गोल ब्लैडर स्टोन को निकालना है, देयर हैज टू बी कट मेड. कट करना पड़ेगा ना बॉडी को, सो दैट द स्टोन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द गोल ब्लैडर. तो जस्ट इमेजिन अगर कट किया जा रहा है एंड आई कैन फील दैट कट, हाउ मच पेनफुल इट वुड बी, राइट? बट देन वी डोंट फील द पेन. क्यों? बिकॉज ऑफ एनेस्थीशिया. तो अगर कोई सर्जरी किया जाता है, बिफोर द सर्जरी द एनेस्थीशिया इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू द पीपल्स बॉडी. ओके, तो एनेस्थीशिया को इंजेक्ट किया जाता है इनटू द बॉडी, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अनकॉन्शियस जैसा बना दे रहा है. वी कैन नॉट फील द पेन, वी कैन नॉट फील एनीथिंग. Okay, so it is lessening down our pain. It does not make us feel the pain. So that was a big discovery, and it was done in the year 1846, and the date was 16th October 1846. And who made the discovery? The discovery was made by William T.J. Morton and John Watson. Okay. तो जब हम बात करते हैं अबाउट द पीरियड बिफोर 1846, ओके, 1846 से पहले भी एनेस्थीसिया को यूज किया जाता था, बट देन द एनेस्थीसिया दैट वाज यूज्ड वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट वन. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट वाज बीइंग यूज्ड. एट दैट टाइम दे यूज्ड टू यूज अल्कोहल. ओके, सो दे यूज्ड टू गिव अल्कोहल टू द पर्सन ताकि उसको फील ना हो पेन. बट इफ यू ड्रिंक अल्कोहल, डू यू थिंक सो इट कैन रिड्यूस द पेन इफ समवन इज कटिंग योर बॉडी? It would be very difficult, right? You would still feel the pain. या तो they were given opium, okay? उनको भांग दिया जाता था कि आप भांग खा लो and you don't feel the pain. So that also it's not a very good idea. या तो उनके मुंह में बुलेट रखा जाता था so that you bite the bullet when someone is cutting your body. Because when you feel the pain, of course you can understand that what would have been the condition कि आपके आंखों के सामने ये कट हो रहा है आपका body and the things are being taken out of your body. So you can understand how painful it would have been. But then
in 1846, this discovery had actually saved life because during this operations, जहाँ पे the people were given alcohol या तो people were given opium, तब we saw that people used to die also. Okay, many people died during the surgical process or after the surgery because of infections properly. तो कर ही नहीं पाएंगे ना अगर आप चिल्ला रहे हो and a doctor is doing the stitching. Of course, the doctor will also not be able to do it properly. So there were many people who actually suffered from infections right after the surgery and they died. So anesthesia, the discovery was actually a boon for the medical field. तो चलो जरा इसके बारे में देखते हैं. So when we are talking about anesthesia, anesthesia was first used at Massachusetts General Hospital in Boston. Okay, तो वहां पे यूज किया गया था the anesthesia for the first time. Okay, और किन्होंने इसको यूज किया था? It was used by dentist William T.G. Morton. तो dentist T.G. Morton ने उन्होंने यूज किया था इस anesthesia को, and who had actually helped him? He was helped by surgeon John Worson. Okay, so John Worson did the surgery and William T.J. Morton had actually administered the anesthesia. Okay, so during this time, what they saw was that the problem that the patients were suffering, क्योंकि patient को pain होता था when the surgery was being done. So when this anesthesia was being given to the person didn't feel the pain. It was all good. Okay, they didn't have the problem at all. तो यहाँ पे came the best part, that when T.G. Morton and John Worson, they understood कि चलो इसको हम use कर सकते हैं, then they started using it for future patients who were coming to them for any kind of surgery. Okay, so any kind of surgery, they started using this anesthesia. अब पहली बात है कि ये anesthesia क्या है? What is the substance that Morton used which was called as anesthesia? He actually had used the compound which is sulfuric acid and alcohol. Okay, उन्होंने इन दोनों को मिक्स किया था, sulfuric acid and alcohol. And when this two was mixed together, they came up with the term which is the sulfuric ether. Okay, so they had used the sulfuric ether on the patients. और जो पहला पेशेंट है जिनको ये दिया गया था, on whose body it was used, it was Glenn Abbott. So Glenn Abbott was the first person who actually got this anesthesia, and the surgery that was performed was a big hit. After that, there were many doctors who started using this sulfuric ether in their patient. Okay, but यहाँ पे हम एक काम करते हैं. सबसे पहले हम जाते हैं that how did Morton know that ये काम करने वाला है? Of course, he didn't know it right after giving it to Glenn Abbott. ऐसा नहीं था. उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था. Who was the specimen? He himself was the specimen. Okay, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ether को लिया था from local chemist, and then there was sulfuric acid. So he exposed himself to this compound. उन्होंने अपने बॉडी को पहले ये कंपाउंड दिया था, एंड he understood कि चलो ये काम करता है. And not only in his body, he actually gave it to his pets also. The dog that he had put it in the dog's body also to see what is the repercussion, कि इसकी क्या effect होती है. And he saw that the effect was kind of good because it worked. It worked completely. So then he was satisfied with its use and he started using it in his dental patients. और फिर धीरे धीरे anesthesia got the recognition and it was used by many people, many doctors for surgeries. So when Morton had actually came up with this discovery, he did not call it as anesthesia. Okay, उन्होंने इसको बोला था Lethean. So he called his creation as Lethean, and Lethean is after the river Lethe, जो होता था in Greek mythology. Okay, so it's something said that कि इस river का नाम होता है which is reducing the pain. Now coming back to anesthesia, अब the time when it was actually used, that time sulfuric acid use किया जाता था. Sulfuric acid with ether को mix करके उन्होंने बना दिया था Lethean.
Similarly, nitrous oxide को use किया जाता था, but now we have actually got modified. तो अभी जो हम anesthesia use कर रहे हैं, these are different forms of compounds that are being used. So we do not use those compounds which were discovered by these people. Of course, वहाँ पे बहुत सारी modifications आ गई है. That is according to the body requirement. How is the body responding to the anesthesia? So now we have two types of anesthesia. एक जिसको हम बोलते हैं जनरल एनेस्थेशिया और एक जिसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड एनेस्थेशिया. और ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इफ आई एम गोइंग फॉर अ सर्जरी एंड आई एम बीइंग गिवन द जनरल एनेस्थेशिया, सो माय होल बॉडी will be unconscious. Okay, मेरी पूरे बॉडी में कोई सेंस नहीं रहेगा. I am not going to feel the pain, or you can say that I'm going to be completely senseless for a certain period of time. Okay, and in localized anesthesia जो यूज किया जाता है ये है for a certain area only. इसका मतलब अगर मुझे सिर्फ आर्म्स की ऑपरेशन करनी है, so the doctor will give me localized anesthesia जो सिर्फ मेरे आर्म्स को ही unconscious करेगा. So my arms will not have any sense or not have any feeling, but the rest of the body will have the feeling. So I can see what is happening with my hand or what is the doctor doing with my arm. Okay, and as I told you, we don't use that compound now that often, or वो एकदम पुराना हो चुका है. So we have got modified over there also. So we have come up with some modern techniques, and we have done some more research, and we have come up with other compounds which can be used as anesthesia. So this was about anesthesia. Let us go to our next discovery, and the next discovery is vaccine. Okay, vaccine, it's a very common term now. Okay, after the COVID that we have actually passed through, यहाँ पे vaccine बहुत एक important term हो गया था, because everyone said that we need to be vaccinated. So now, who developed this vaccine? It was actually in the year 1796. In the year 1796, the person, Dr. Edward Jenner, he came up with vaccine. Okay, so Edward Jenner, he was the first successful person who had actually administered vaccine. और उन्होंने इस वैक्सीन को बनाया था, not बनाया था. Let me tell you what he did. He had actually taken the pus from the body of a person who was suffering from cowpox. Okay, तो of course जहाँ पे वो काम करते थे, there was a cow shed जहाँ पे the milkman and the milkmaid used to work. Okay, तो वहाँ पे he had seen that the milkmaid was suffering from cowpox. तो उसके बॉडी में ना पिंपल्स भरे हुए थे, सोर थे. of course सोर के अंदर पस होता है. so what he did was that उन्होंने उस सोर से मैटर को निकाला. so whatever was inside that sore, inside that pimple like stuff, उन्होंने उस मैटर को निकाला और फिर उन्होंने इसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया into a boy's body. Okay, so what he did was that there was a milkmaid who had this cowpox. She was suffering from cowpox, so she had this sore all over the body. तो उन्होंने क्या किया था? From the milkmaid's hand, he took out the matter and then he injected it into the body of a boy. Okay, now the thing was that once it was injected, what happened? So let's see into that. So he had actually administered it to a boy who was just 8 years old, and his name was James Phipps. तो जेम्स फिप्स सिर्फ 8 साल के थे जब उनके बॉडी में इस मैटर को इनोक्यूलेट किया गया, या तो इनको इंजेक्ट किया गया. So as soon as he was injected, what happened was that he started feeling sick. Okay, James Phipps was having problem. He was feeling sick, but that sickness only was for few days. बस कुछ दिनों के लिए ही था. After that, James became all good, all healthy. Okay, so he had no problem. He was all good or healthy. तो फिर after few days, or you can say after few weeks, after few months, in July 1796, जेनर ने फिर से फिप्स को एक मैटर इंजेक्ट किया. But this time the matter was not from a human who had cowpox. This time the matter was a person who had actually smallpox. Okay, तो उन्होंने smallpox का जो सोर था उससे उन्होंने मैटर को निकाला, and then he had injected this matter into the body of James Phipps. अब इसका रिजल्ट क्या आया? Result was completely an astonishing result.
because James Webb did not suffer from any smallpox. उसको कोई problem नहीं हुआ. He was all good and all healthy. He had no problem. So here came the vaccine. Okay, so जैसे हमें पता है वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन इज नथिंग बट इट्स जस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कॉजिंग दैट डिजीज. तो हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं विच इज अ डेड और द वीक माइक्रोब्स, और वी आर एक्चुअली टेकिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ दिस माइक्रोब्स, और फिर हम इसको इंजेक्ट करते हैं इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन. अब जब इंजेक्ट किया जाता है देन व्हाट्स द रिजल्ट? द रिजल्ट इज हमारे बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है, right? So our body has its own defense system. So we have the white blood cells, और इसी white blood cells में एक type of cells होता है जिसको हम बोलते हैं lymphocytes. तो lymphocyte क्या करता है? जैसे it comes across this microorganism, it starts producing antibodies, and the antibodies then helps this WBC to kill the microorganisms. और बस kill करना नहीं होता है उसका main idea. The idea is kill it and remember it forever. ओके, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम इन आवर बॉडी. सो आवर बॉडी एक्चुअली जनरेट्स एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द माइक्रोब्स विच हैव बीन इंजेक्टेड इन आवर बॉडी. तो ये बेसिकली होता है टेलिंग माई बॉडी दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर इन्वेशन बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड हु एक्चुअली हैड कम अप विद दिस आइडिया कि चलो डेड माइक्रोब को दे देते हैं, या पार्ट ऑफ द डेड माइक्रोब, वीकेंड माइक्रोब, any microbe we can give it. It was Edward Jenner. So he came out with the smallpox vaccine. Okay, so you can see that Phipps was the first person to be vaccinated, and later the name vaccine was given to this matter. So this was done by Edward Jenner. It is of course a very big discovery, because iske baad then we came up with vaccines of different types of diseases, and many people were saved because of this vaccine. So this was about the discovery. Let us go to the next discovery. The next discovery is oral rehydration therapy. अगर आपको कभी डायरिया हुआ होगा, या अगर आपको कभी लूज मोशन हुआ होगा, वॉमिटिंग हुआ होगा, you must have seen that people actually tell you to take ORS, right? Oral rehydration solution. और ये बहुत कॉमन होता है. नाउ इफ यू सी, लाइक इफ एनी पीपल इज सफरिंग फ्रॉम फीवर ऑल्सो, द फर्स्ट थिंग इज बीइंग सेड इज दैट यू स्टार्ट टेकिंग ORS. ओके, ORS लेना बहुत जरूरी है. So what is this ORS and how is this ORS helping? And who was the person who actually came up with this idea of ORS, the oral rehydration solution, and the whole technology is called as the oral rehydration therapy. So this was discovered in the year 1971. And we should be proud because this was discovered by an Indian. Okay, so Mr. Dilip Mahalanobis, he was the one who actually came up with this idea of ORS. तो चलो जरा इसको देखते हैं. Now when we talk about the oral rehydration therapy, it is used to treat moderate dehydration. अब देखो, जब हमारे बॉडी के बारे में हम बात करते हैं, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू मेंटेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन इट. वो बहुत ज़रूरी होता है कि एक फ्लूइड अमाउंट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, वो बैलेंस रहना ज़रूरी होता है. बट देन ड्यूरिंग डायरिया, ड्यूरिंग लूज मोशंस, ड्यूरिंग वॉमिटिंग, हमने क्या देखा है कि हमारे बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकल जाता है. Okay, now because so much of fluid is lost from our body, now our body starts getting disbalanced. Okay, क्योंकि हमारे बॉडी में जो बैलेंस मेंटेन थी of the minerals and the water which is very much required for the functioning of the body, वो बिगड़ गया. So because of this fluid going out, now our cell starts losing its function. वो function ठीक से नहीं कर पाता है. And ultimately what's the result? The result is death of the person. Because अगर cells काम नहीं करेंगे, cells die, so how will the person live? The person also dies. And this was the case. Okay, this was the case. Many people lost their life because they could not retain the fluid in their body. They didn't had the idea कि इस fluid को कैसे retain करें. Or you can say that वो idea ही नहीं पता था कि fluid को retain करना है. Okay, so it was Dr. Dilip. He came up with this idea. तो ये ORS होता क्या है? It's a very simple thing.
ORS is made up of water, glucose, sodium and potassium. So कुछ minerals होते हैं, glucose is there and water. जब इनको mix किया जाता है तब बनता है the oral rehydration solution. Of course यहाँ पे बस लेना नहीं होता है, there has to be a proper measurement. Okay, proper measurement होनी चाहिए so that this fluid can work. Now, how does this fluid work? चलो इसको जरा जानते हैं that how does this fluid work and why everyone keeps on telling us कि कुछ भी हो जाए तो you should start taking electrol, you should start taking ORS. Now, when we are talking about ORS, it is helping to optimize the absorption of fluid in the intestine. तो जैसे intestine से fluid निकल रहा है, people who have loose motion, of course, when they are passing the stool, fluid भी is coming out with the stool. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर we have ORS in our body, so from this intestine, the fluid will be absorbed. Okay, absorption हो जाती है. So fluid is not allowed to go out of our body. तो अगर fluid नहीं जाता है, the balance is maintained. When the balance is maintained, definitely our cells will function properly and the body will function properly. So this is the idea behind the ORS. Just to make sure that the fluid stays back in our body, the fluid does not go out of the body. Okay. Now talking about this discovery, Dr. Dilip, he was actually an Indian pediatrician. Okay. So he was a child doctor, but along with a child doctor, he was a research worker also. So he was doing a lot of research. Now there came a time when in a certain part of our country, वहाँ पे डायरिया बहुत होने लगा. Okay, बहुत ज़्यादा डायरिया होने लगा. Now, what was that? Or which part of India was that? It was actually the West Bengal area. Okay, so during the Bangladesh War of Freedom, जब बांग्लादेश freedom के लिए लड़ाई लड़ रहा था in the year 1971, so there were many people who had actually started moving from East Bengal to West Bengal. जिनको हम refugees बुलाते हैं, right? So there were refugees who were shifting from East Bengal to West Bengal. East Bengal, that time it was called as East Bengal, but now we call it as Bangladesh. So from that area, we saw people coming into India. Of course, that time, those were the Indian people only who were coming because East Bengal was a part of India only. So now, talking about these people who were coming, they were called as refugees. So of course, refugees को घर पे तो नहीं लिया जा सकता है ना. So they had this refugee camp. और तब ये देखा गया, there was a sudden outbreak of the problem, okay, which was cholera. So cholera broke out in the refugee camp, जहाँ पे hundreds and hundreds and hundreds of people were staying. और जैसे ही cholera broke किया, they saw that people were dying. Okay, people, they simply died. कुछ काम नहीं कर रहा था because of course medicines was not there like that. Whatever fluid they were getting, whatever supply that they were getting, that was not enough to save so many hundred of people who were falling sick. So that time Dr. Dilip came up with this idea. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ORS बनाया with the help of the local people. So local में जो उनको supplies मिलती थी, उन्होंने उसको use किया and he started making the ORS. So what did he do? He actually took ingredients like 22 grams of glucose, 3.5 grams of sodium chloride and 2.5 grams of sodium hydrogen carbonate. तो उन्होंने ये लिया and it was all locally available. So he mixed it and he created the ORS. और ये जो composition है, ये composition is only for a liter of water. So actually many such packets were made which had this composition and these packets were mixed in big drums of water. तो बड़े-बड़े drums होते थे जिसमें पानी भरा हुआ होता था. So all these products were mixed in the water. और उसी पानी को फिर पिलाया गया to the people who were suffering from cholera. Okay, so the people who were suffering from cholera, they were being given this liquid. And it was seen during a period of 8 weeks. 8 weeks के period में, this solution was given to 3,700 patients. 3,700 patients जो वहाँ पे थे, उनको ये solution दिया गया, पिलाया गया. And out of so many patients, only 135 patients were such who actually could not survive. They died.
maybe the condition was much more worse. But think about the majority of the patient who got saved only by taking ORS. Bas unhone ORS piya, there was no other medicines. So they just drank ORS and they were all very well. So they got completely cured. So at the time when actually this had started, he had actually started his research work in the year 1966. तो तब उन्होंने रिसर्च वर्क शुरू किया था अबाउट दी ORS, बट दैट टाइम इट डिड नॉट गेन मच रिकॉग्निशन. ओके, लोगों ने बोला ये क्या है, इससे कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस बी अ मेडिसिन, हाउ कैन दिस सेव पीपल. But after 1971, when it was seen that yes, people actually got saved, this time it gained acceptance. Okay, it gained acceptance, and then it was considered as one of the best medical advancement that had happened in human history. Okay, but sadly Dr. Dilip did not patent it, so we don't see Dr. Dilip's name everywhere or having a Nobel Prize for that, because he did not patent that product in his name. So this were some of the discoveries. आज हमने बस some of the discoveries के बारे में बात किया, which actually made a huge difference in the life of people. These discoveries were very small. ऐसा लगता है कि ये भी discoveries है. But yes, these discoveries have actually saved so many lives. So let us see how many lives did they save. So here we have a small data. Okay, small data till the year 2015. So let's look into the number of lives saved. When we talk about anesthesia, anesthesia has saved around 50 million lives. When we talk about pasteurization, pasteurization has saved around 250 million lives. When it comes to insulin, insulin has saved till now 15 million lives. When it comes to vaccine, vaccine have saved 1 billion lives. When it comes to ORS, ORS has actually saved 6 million lives, and it is still counting. Okay, क्योंकि मैंने बोला ये data बहुत पुराना है, it's not a recent data, but the number of people who are being saved because of this discoveries, they are doubling up. So these are some of the discoveries, as I said, कि medical field में और भी बहुत सारे discoveries हुए हैं. जिन discoveries को जानने के लिए now you have to join us in 88 Guru. So the way we had discussed the discoveries, we will be discovering more of those inventions, जिन्होंने इनको किया था, who were the one who had come up with these inventions, discoveries, and how it has touched lives. So for that, you need to join us at 88 app. Now, when we are talking about the 88 Guru app, यहाँ पे we have the best teachers who have a long year of experience, and they are actually guiding you, helping you out for your future development. यहाँ पे अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, so we have our number right over here. So our executives are always available. So you can talk with our executives in this number, and they will help you out in any of the queries or any of the doubts you have. So with this, we come to the end of our today's live session. Thank you.